alaikum everyone. My name is Maha Bilal, an interviewer and social media marketer at Startup Insider magazine. Today, the person I've invited for interviewing is Mohammed Zulkernayn. Assalamu alaikum, sir. How are you? I'm perfect. I'm positive. How are you? Good, sir. Thank you. Sir, thank you so much for being here with me for the interview and taking time for that. I really appreciate that. Thank you so much. Thanks. Sir, I'll just start the questions. So, can you tell me about a bit about yourself? That what have you done before and what you're doing now currently? Okay, so before coming into this copywriting stuff, I was working as a financial analyst, and after that, I started teaching, and my qualification is ACC in math and MPhil and PhD in accounting from Oxford Brookes. So that was my academic and professional experience. And for the past, you can say 2 years, I'm doing this e-commerce Amazon business, and I've just started. I've just opened my this copywriting agency, and Alhamdulillah, now it's going good. Sir, so what did you teach about? Like you teach ACCA or what? At the moment, I'm teaching, accounts and finance subjects in universities. In past, I have, I was teaching in Zabist IOBM as a visiting faculty, and currently I'm teaching in Sakhar IBA. Okay, sir. So, Yeah. can you explain me a bit about your startup and how did you got its idea of starting this? Okay, so the idea of like working on this concept is based on just a very basic concept that copywriting is a very professional and $1 million skill. Yes. And if we see West, so they really focus on strong copy because it brings strong conversions. And I was seeing this area like not that really working well in Pakistan. And I was for the past you can say 2.5 years I was working in this content writing and all that. So I did some certifications in copywriting, and then I got to know that it's a really good skill, and it can bring a lot of clients conversion, all that, because whatever you do, it requires a strong copy. If you are having a Facebook ad, you need a strong copy. If you are writing a good product descriptions, you need a strong copy. Even if you're sending someone a proposal, so whatever things you're sending, it needs some initial good copy. So this is where me and Writerland comes. So in before, I guess in Pakistan, there are very few professional copywriting agencies working. So I thought that let's be different and stand out from others. So I started working on the those models where the Western you can say the agencies are working. So I to burnish myself, to burnish my skills. Initially, I did some certifications. I'm a certified from Copy Hackers, and from there I got to know the initial you can say the copywriting tips and all that stuff, which is very vital at the moment and which is of paramount importance. So that's how it all started. Okay, so perfect. So how did you thought this name? Like, where did you get the idea of calling it this Writerland? Where did it came from? Writerland, I guess if you see big brands, there's Yes. only one thing in common, that they have simple tagline, they have simple names, and this is how they connect with the masses and the classes. So being a writer, I was like wondering that what name I should just suggest for myself, so it should also match with my competencies and my inner web of complex web of wires. So Exactly. from writer, it started just writer land, because I just love this name, and I was using this as a hashtag when I was writing my initial blog. So I just thought that okay, just make this name as your agency. And after that, I just crafted the tagline, turning conversation into conversion, because this is the you can say the main objective of my agency, that because if the client is not getting conversions, then there is no Exactly. point of existence. Yes. So this is how it all started, and it's for me it's very simple, the name and the tagline, and that is why it is bringing good conversion, because whoever see my copywriting name and this tagline, so they exactly know that what I am doing at the moment. Exactly. Perfect. So if I ask you कि जैसे कहते हैं कि there is one thing as compared to your competitors जो आपको उनसे अलग करती है.
So what's Hmm. that thing in your startup? As per Simon Sinek, it takes 6-7 seconds for a buyer to buy any product, and that Exactly. buying power is based on the emotional connectivity. Yes, Our sir. limbic system works on the emotional connectivity. I try my best to bring emotions in every copy which I craft. So, because let's say I give you one example, I was working on a product. It was like baby blanket, right? So Yes, when sir. I was looking at other product descriptions, there was like written that it is made of organic material, the size is this. So I thought that it's a baby blanket, so there must be some emotions in it. So when I crafted the bullet, I just wrote that for this baby blanket a mother has to wait for 9 months. It's a 9 month struggle, Exactly. right? Yes, So sir. this is how I connect the mother with that baby blanket, because the target buyer is the mother who gonna purchase, and if she's Yes, gonna read this same line, so definitely the conversion will come. Because no matter how many ads you have, how many campaigns you run for a product, yes, sir. when there is a click after that, the conversion comes through the content, and that's where the writerland comes. So this is how I bring emotional connectivity, and that's I feel that this is how I differentiate from others. So इस तरीके से जो है ना, मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप everyone at some point is emotional. Yes, sir. Okay, it could be Exactly. 1%, it could be 2%. So we just Exactly. need to hit that limbic system and bring conversion. So that's a basic simple model of writerland. So actually you're quite right about it because सर मैंने भी देखा है कि बहुत सारी firms इस तरह की होती हैं. I have seen this myself कि वो काम सिर्फ इसलिए नहीं कर पाती या फिर employees वहां पे comfortable इसलिए नहीं होते because वहां पे emotional intelligence नहीं होती. तो Exactly. मतलब जो सीईओ है उसके लिए मैटर ही नहीं करता कि उसका वर्कर जो है किस चीज से गुजर रहा है या कुछ इस तरह का. तो वहां पे इमोशनल इंटेलिजेंस जहाँ पे ना हो तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट रन योर बिजनेस. अच्छा. Perfect. Yeah. what is what do you like suggest the youth कि किस तरह वो आपसे इंस्पायर हो मोटिवेट हो in order to start their own businesses as well uh, like you have. I, I always believe that people see the success, but they don't see that how the guy is hustling, or किस तरह हम hustle Exactly. करते हैं, किस तरह हम Yes, work sir. hard करते हैं. It's not I feel that everybody's cup of tea. It takes a lot of time to be at some point and to reach the pinnacle of success. Yes, For sir. example, if I talk about my struggle, and honestly speaking, किसी को जो है वो किसी की failure सुनने में interest नहीं होता. So बिल्कुल how I नहीं. started, there was a time that when I was doing this, I was in this 9 to 5 slot. I was not making 6 digits, and I was like constantly, many family losses, emotional losses, every type of losses I faced in my life. So, but मेरे अंदर का जो intellect था, that really didn't stop me to give up. I was like always reading intellectual. I was a very avid reader. मैं books read करता था. मैंने कहा कि कुछ भी हो जाए, give up नहीं करना है, because it's not good to beg from anyone. And Exactly. it's always good to, so एक आपका जो self respect होता है ना, वो Yes, sir. अल्हम्दुलिल्लाह like since inception मेरे अंदर था. So I was like working very hard. मैं 15 16 घंटे I was working, and I was just reading books, and entrepreneurs की मैं TED talks सुनता था. I was like thinking why they are different. I read 5 a.m. club. मुझे पता चला कि जितने भी successful लोग हैं, they utilize this 4 to 7 a.m. time. I started working on that. मैं कुछ भी हो जाए, at times like I try my best कि मैं 4 से 7 बजे मैं ज़रूर उठता हूँ, जी because सर. I know that that is the important time. वो उस क्योंकि there is a time management, and time management is, it's like life management. So मैंने अपनी रूटीन चेंज की, मैंने अपना सर्किल चेंज किया, एंड मैंने सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज किया. वो आपका जो अनचेंज माइंडसेट होता है, उसको जो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैं उस तरफ लेके गया. बहुत से एक मौलाना रूमी सेज के इफ अल्लाह हैज गिवन यू फीदर्स देन व्हाई यू क्रॉल. जब अल्लाह ताला Yes, ने sir. आपको पर दिया तो फिर आप क्रॉल क्यों करते हैं? So Exactly. that he was like Maulana Rumi was my my inspiration. उसके अलावा व्हेन आई केम इन दिस ई कॉमर्स, तो एक्सट्रीम कॉमर्स में तो सनी अली थे यहाँ पे, इज वेरी फेमस गाय. तो मैंने उनको बहुत फॉलो करता था. तो उन्होंने ये कहा कि इफ़ यू हैव दिस मनी टाइम एंड लोकेशन इंडिपेंडेंस देन यू कैन बी सक्सेसफुल. सो आई वाज वर्किंग ऑन दिस मॉडल. मैंने ई कॉमर्स के अंदर काम किया. मैंने फॉर एग्जांपल बहुत से क्लाइंट के साथ काम किया. मैंने क्लाइंट क्लोज किए. इनिशियली मुझे बहुत सारे फेलियर्स मिले. आई वाज लाइक डूइंग वन थिंग, उसमें मुझे फेलियर मिला. देन आई स्टार्टेड समथिंग एल्स.
एट द एंड मुझे ये पता चला कि व्हाई नॉट टू वर्क ऑन माय एग्जिस्टिंग स्किल मेरी राइटिंग थी. So I just connected my writing into this from content writing. I just converted all that stuff into copywriting because copywriting जो होती है वो quickly आपको सेल करवाती है. तो मैं उसको कनेक्ट किया मैंने अमेजोन से, बिकॉज हर जगह पे इफ इट इज एच सी, ईबे, अमेजोन, वॉलमार्ट, दराज पे कुछ भी आप उठा के देख लें, देयर इज सम वर्क ऑफ दिस कॉपी राइटिंग कम्स बैक एंड पे होता है. सो आई थॉट कि जो आपकी जो ट्रैफिक आती है जहाँ से आपकी ऑर्गेनिक बाइंग पावर होता है, Yes, मैंने sir. उस पर काम करना है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट फंडामेंटल. सो इनिशियली मैंने जो है वो सारी चीज़ें देखी, बट मैंने गिव अप नहीं किया. और यही है कि टाइम लगता है, बट एट द एंड रिजल्ट आपको फिर जो मिलता है वो फिर आप नहीं देखते हैं, आपके साथ और लोग भी देखते हैं. एग्जैक्टली. एंड वैसे भी सर आई थिंक कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि पहले मैंने जो मेरे अंदर जो एग्जिस्टिंग स्किल था, मैंने यू डिड नॉट यूज इट. आप नई चीजों की तरफ जा रहे थे. यू फेस फेलियर. यू फेस प्रॉपर एग्जैक्टली. फेलियर. एंड सर कहते हैं कि हर चीज में कुछ भी हो तो बेहतरी होती है आपकी, अल्लाह की श्योर. तरफ से. तो ये है कि इससे हो सकता है कि अगर आप वो फेलियर फेस ना करते तो आपको ना पता चलता कि मेरा जो एग्जिस्टिंग स्किल है वो मेरे लिए इतना काम आ जाएगा. ट्रू. अच्छा ट्रू. सर, वन थिंग आई नोटिस इज कि आपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात जो है यहाँ पे फैक्टर आपने कहा है कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल. जरूर होना चाहिए. सर आपको व्हाट डू यू सजेस्ट एज द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप कि बाकी अब यूथ के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट देम अबाउट दिस सेल्फ रिस्पेक्ट फैक्टर के. सर कभी कभी ये है कि कुछ सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो इग्नोर करनी पड़ती है. सो डू यू लाइक सपोर्ट दैट थिंग और नॉट कि सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है कभी रखना चाहिए साइड पे या कुछ इस तरह का. इट इज नॉट गुड टू हैव ईगो. ईगो एक बिल्कुल डिफरेंट होता है. आज के दौर में नेटवर्किंग एंड बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. आई यस सर. ऑलवेज लाइक आई एम द प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया कि नेटवर्किंग करें, टीम वर्किंग करें. कभी भी कोई चीज़ सोलो फ्लाइट पे नहीं होती. मैं अगर let's say इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, सो आई हैव बेस्ट पीपल विद मी. तो यस सर. सेल्फ रिस्पेक्ट ये होती है कि एटलीस्ट आपने सबसे पहले तो आप खुद पे बिलीव करना है. ये यस सर. बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बहुत ज्यादा वंस यू इम्पोर्टेंट. बिलीव इन एग्जैक्टली. योरसेल्फ, the other gonna believe in you. यस तो वो सर. आप पे तभी एग्जैक्टली. बिलीव करेंगे अगर एक एक जो लीडर होता है या एक जो फाउंडर होता है, अगर वो ही काफी लो मोरल का है या उसकी कोई एथिक्स नहीं है या वो डाउन है, तो वो टीम को कैसे लेके चलेगा. सेम गोज विद द कंट्री और एनी थिंग वी रन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मेंटेन रहे. और वो चीज आपको जो है ना कभी भी किसी और के दरवाजे पे नहीं लेके जाएगी. अगर यस आपको सर. लेके भी जाएगी, यू विल बी हैविंग नेगोशिएशंस एंड डील्स. आपको यस कभी सर. भी जो है ना वो स्लेव माइंडसेट से लेके नहीं जाएगी. सो अगर आपकी अपनी स्किल, क्योंकि अगर आप एलॉन मस्क और एंटरप्रेन्योर दूसरे जिनको भी सुने, सो दे एग्जैक्टली. से दैट इट्स अ वर्ल्ड ऑफ स्किल सेट. आपके पास स्किल है, आप मिलियन डॉलर कमा सकते हैं. आपके पास स्किल नहीं है क्योंकि एजुकेशन हमारी अपडेटेड नहीं है. सो वी नीड टू मोर फोकस. अब एक मार्केटिंग का बंदा है, सो अगर उसको फेसबुक ऐड चलाना नहीं आता, इंस्टा रन नहीं करना, तो कैसे मार्केटिंग में जाएगा. सो सेम गोज विद एनी एवरी अदर स्किल वी हैव. सो स्किल यस. सेट पे मैंने बहुत काम किया है और मेरी टीम भी जो होती है मैं उनकी स्किल्स पे भी इन्वेस्ट करता हूँ. आई वो लोग भी सर्टिफाइड होते हैं. तो यह है कि इसी तरीके से लाइक वी आर सस्टेनिंग. सर मैंने भी एक्चुअली ये चीज नोटिस की है कि फॉर एग्जांपल आई एम डन विद माय डिग्री. तो सर मैं कहीं भी जॉब के लिए जाऊंगी, दे नेवर आस्क यू अबाउट कि भाई आपने इसमें क्या क्या पढ़ा. दे जस्ट वांट योर स्किल कि आप वो काम कर सकते हो कि नहीं. Okay. So, my last question to you is कि what is that one message you want to give to the youth about what you have experienced, और किस तरह जो है वो भी आपकी तरह, like as in if someone wanted to start a business or something, तो क्या आप चीज suggest करना चाहेंगे to the youth? देखें, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इफ आई टॉक अबाउट द क्रक्स ऑफ माय लाइफ, Yes sir. सबसे पहले तो ये होता है कि अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं तो हम बाहर से कभी खुश नहीं रह सकते. वी हैव टू एक्सेप्ट इट नाउ. तो Agree. ये है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी वाला फैक्टर ज़रूर कनेक्टेड होना चाहिए. Yes sir. जस्ट कनेक्ट अल्लाह ताला. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम क्या कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें कहते हैं हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, बट Exactly. एट द एंड इज सम डिविनिटी जो आपको चला रही होती है. Yes सो sir. वी मस्ट फोकस हमारे रूट्स, जो अगर हम लेट्स से अगर हम कनेक्टेड नहीं हैं, वी मस्ट कनेक्ट विद अल्लाह ताला. और उसके Exactly. बाद फिर ये है कि हमें एक हेल्पिंग नेचर करना चाहिए अपना. अगर हम हेल्प नहीं करेंगे
तो देखें कि वही बात है ना कि अल्लाह ताला सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। सो इफ़ वी गोना सी दैट द पर्सन इज़ हेल्पिंग समवन, हम बहुत मटेरियलिस्टिक हो रहे हो तो हम नहीं कर रहे होते, लेकिन अगर हम ग्रेटर गुड की तरफ जाएँगे एट द एंड, आई हैव फेस्ड इन दिस इन माय लाइफ कि जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ Yes, sir. विदाउट एनी इंटरेस्ट, आई गेट अ क्लाइंट। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. बिल्कुल. कुरान में अल्लाह ताला सूरह सफ़ात में कहते हैं कि व्हाई डोंट यू हेल्प ईच अदर, व्हाट हैपेंड टू यू? Yes, सो sir. दिस Exactly. आयत रियली टच्ड मी। तो Yes, मैं sir. जब ये आयत सुनता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि नहीं यार, मैं उसमें से नहीं होना चाहता, आई वांट टू हेल्प अदर्स। सो Yes, sir. यूथ को मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि डोंट बी रियली मटेरियलिस्टिक, हेल्प करें, अपना जो इंटेंट है वो क्लीन, जो आपका इंटेंट है वो उसको क्लीन रखें, और आपको फिर जो ना कोई रोक नहीं सकता। हाँ, मेहनत करें, शॉर्टकट कोई नहीं है। यू हैव टू वर्क इनिशियली फॉर 15-16 आवर्स डे, करना पड़ेगा जब तक कि आपको फेलियर्स आते रहेंगे, ट्राई एक चीज में फेल होते हैं, दूसरी चीज में फेल होते हैं, यू हैव टू कीप हसलिंग until you find your vibes, जो हम inner call कहते हैं। So my inner vibe, my inner call was this copywriting, and that's how this Writerland came. मैं भी यहाँ पे बैठ के I have resources working in Turkey, I have resources working in Japan. So मैंने एक shamrock structure बनाया कि जिसकी basis पे alhamdulillah things are all are going fine. So I have best people with me, तभी I am delivering good results. Yes, sir. Exactly. Perfect. Sir, I actually quite enjoyed interviewing you because मैंने भी सर लाइक I've started job, काफी चीजें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, नई चीजें मेरे लिए, लेकिन ये है कि जब when you hear someone's story कि उन्होंने किस तरह अपनी जर्नी चलाई है, फाउंडर एक हो और स्टार्टअप को चलाया, किस तरह एम्प्लॉयज को लेकर चल रहे हैं, सो आई फाउंड दैट थिंग इन यू कि आप यू क्वाइट पॉजिटिव, you have been quite Exactly. positive, but apart from that, you have not forgotten your failures जो आपको मिले, because if you Exactly. forget your failures तो obviously आप फिर मिस ट्रैक हो जाते हैं कुछ इस तरह का. Sure. So it was quite nice talking to you. Thank you so much Same for here. your time. I really enjoyed. That was my, I guess, first professional interview to someone. So it was really a good experience, and I heavenly enjoyed it. And wish you Thank you. good luck. I would Thank you love to so much. connect So with wish you you. good luck too, and I just hope कि आपका जो startup है वो और आगे बढ़े, and whatever you want to achieve in life, you do Inshallah, inshallah. inshallah, Inshallah. inshallah, inshallah. Thank you. Thank you, sir.